A very good morning and welcome you all, my dear students. It's Anju ma'am here. Today I am going to explain you chapter 5 of your book Flamingo. Its name is Indigo and written by Louis Fisher. So first of all, I will tell you that this chapter belongs to Mahatma Gandhi, who was a prominent political leader of India, known as Bapu, the father of the nation. His role in the freedom movement of India is unforgettable. First of all, I am telling you a brief description about Louis Fisher. Louis Fisher was born on 29 February 1896 in Philadelphia, USA. First, he worked as a school teacher. Then he served as a volunteer in British Army during the First World War. Then he made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Reviews, and for European and Asian publications. As a journalist, he lived through and reported the Second World War. So, dear students, this chapter Indigo, this is an excerpt. The following is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhiji by Times Educational Supplement. So this is the first part of the video. I am going to start the opening stanza. When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram in central India. So this chapter is an excerpt from Louis Fisher's famous book The Life of Mahatma Gandhi. The writer observed Gandhiji's work to fight for the noble cause of the voiceless, downtrodden Indians who reeled under the rule of indifferent, oppressive Colonial British rule, and Indigo is one of the many episodes of Gandhiji's long political struggle. This chapter describes the Champaran visit of Mahatma Gandhi, which was undertaken on the entreaty of poor peasants. Rajkumar Shukla, in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhiji's life. So, first of all, I am giving you main points. Rajkumar Shukla, who was a poor peasant from Champaran, he visited Gandhiji and he made request to go with him, and he came to Gandhiji to complain about injustice which was done by British landlords. So students, pay attention. When I first visited Gandhiji in 1942, it was the year 1942, and the narrator, he visited Gandhiji at his ashram in Sevagram in Central Asia. He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. Then Gandhiji told, I will tell you that how did I compel the Britishers to leave the country. And now it was in 1917. He had gone to December 1916 annual convention of INC party in Lucknow. When narrator went to December 1916,
and annual convention of INC party was going on in Lucknow. एनुअल कन्वेंशन वार्षिक अधिवेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में चल रहा था. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स. और इसमें 2301 डेलीगेट्स थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे और बहुत सारी विजिटर्स. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड, ए पुअर पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया. तब गांधी जी कहते हैं एक पुअर पीजेंट चंपारण बिहार से आया एंड हिज नेम वॉज राजकुमार शुक्ला. ही वॉज लाइक अदर पुअर पीजेंट्स of India, poor, emaciated, lean and thin, and uneducated. And he told, I am from Champaran. He introduced himself as Rajkumar Shukla. Rajkumar Shukla कौन था? एक poor peasant. Peasant, landless farmer. A poor, uneducated, and lean and thin. I am from Champaran. I want you to come to my district. Gandhiji had never heard of the place. Rajkumar Shukla went to Gandhiji in order to complain about injustice which was heaped by British landlords. So he wanted to take Gandhiji with him to show the poor condition of poor peasants. Under an ancient arrangement, Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. Rajkumar Shukla was one of the poor peasant. He came to Gandhiji. So we can say Rajkumar Shukla had come all the way from Champaran district in the foothills of Himalayas to Lucknow to speak to Gandhiji. Rajkumar Shukla accompanied Gandhiji. He wanted to take Gandhiji with him. And he was one of the poor peasants like other poor peasants of India. He was illiterate but resolute. Illiterate था लेकिन firm determined. He had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. बिहार में जो लैंडलॉर्ड सिस्टम चल रहा था और उसमें जो पुअर पीजेंट्स दे बिकेम विक्टिम्स ऑफ इनजस्टिस. सो ही केम टू गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट दैम एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी. किसी ने कहा कि गांधी जी से बात करो. गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर. ये कानपुर है बट अर्लियर इट्स स्पेलिंग इट वॉज स्टार्टेड विथ CAWNPORE and now KANPUR, Kanpur, and was also committed to go to other parts of India. राजकुमार शुक्ला campaigned him everywhere. जहाँ जहाँ गांधी जी गए राजकुमार शुक्ला उनके साथ रहा. And he was resolute. He was illiterate, poor, emaciated, but resolute. हालांकि गरीब था, लीन एंड थिन, दुबला पतला, निर्बल, इलिटरेट है, अशिक्षित है, लेकिन फर्म रिजोल्यूट. गांधी जी जहाँ भी गए उसने साथ नहीं छोड़ा. देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम फॉर वीक्स. ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड. फिक्स ए डेट ही बैक्ड. पोलाइट अपील उसने जो है ही प्लेटेड, ही बैग्ड गांधी जी कि एक डेट फिक्स कर दें, आप मेरे साथ चलें. Impressed by the sharecropper's tenacity. So Gandhiji was impressed by his firm resolution. He was resolute. Tenacity, firm, strong determination, firm resolution. And story.
Gandhiji said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. Finally, Gandhiji was ready to go with him. Months passed. Rajkumar Shukla was sitting on his haunch at the appointed spot in Calcutta when Gandhiji arrived. बहुत टाइम गुजर गया, मंथ्स पास हो गए, लेकिन राजकुमार शुक्ला ने उनका साथ नहीं छोड़ा. He wanted till Gandhiji was free. He was waiting that Gandhiji would be free, then he would take him with him. Then the two of them, two refers to Rajkumar Shukla and Gandhiji, boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer. Rajkumar Shukla led him to the house of a lawyer. And lawyer, his name was Rajendra Prasad. Rajendra Prasad, who later became president of Congress party and after that India. Dr. Rajendra Prasad was out of town. At that time he was not present in town, but the servants knew Rajkumar Shukla as a poor yeoman, poor peasant, landless farmer who pestered their master, who bothered their master. It means Rajendra Prasad, to help the indigo sharecropper. So they let him stay on the grounds. Servants of Rajendra Prasad allow them to stay on the condition that Gandhiji, whom they took, be another peasant. राजकुमार शुक्ला एक पुअर पीजेंट था और गांधी जी भी बहुत सिंपल थे. ही वॉज इन हिज वेरी सिंपल ड्रेस. सो सर्वेंट्स थॉट दैट ही वॉज another poor peasant. Gandhiji was not permitted to draw water from the well lest some drops from his bucket pollute the entire source. Gandhiji was not allowed to draw water from the well. गांधी जी को वेल से, कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनको लगा कि ये पुअर पीजेंट हैं, अनटचेबल हैं. इफ़ सम ड्रॉप्स फ्रॉम इस बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स. अगर पानी निकालते समय, बकेट मीन्स बाल्टी से कुछ बूंदें वेल में गिर जाएंगी, कुएं में गिर जाएंगी, तो सारा पानी पॉल्यूट हो जाएगा. सो हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल. डियर स्टूडेंट, सी द सेम पेज. Some questions are here. Think as you read. Strike out what is not true in the following. Rajkumar Shukla was a sharecropper. Sharecropper था. Yes. Politician? No. A delegate? No. And he was a landlord? No. आपको इसमें स्ट्राइक आउट करना है जो चीज़ इसमें ट्रू नहीं है. सो इट मीन्स दैट राजकुमार शुक्ला वॉज ए शेयर क्रॉपर, ए पॉलिटिशियन, डेलीगेट, ए लैंडलॉर्ड. सम ऑप्शंस आर गिवन हेयर. सो द राइट ऑप्शन विल बी विच इज़ नॉट ट्रू, ए पॉलिटिशियन. वो एक पॉलिटिशियन नहीं था. राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इलिटरेट. इसमें आपको स्ट्राइक आउट करना है जो चीज़ ट्रू नहीं है. ट्रू क्या है? राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर. यस, दिस इज़ राइट. फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ इनकरेक्ट. इलिटरेट, दिस इज़ करेक्ट. सो यू हैव टू मार्क विच इज़ नॉट ट्रू. So pay attention, don't confuse. And why is Rajkumar Shukla described as being resolute? राजकुमार शुक्ला को resolute क्यों कहा गया है? Rajkumar Shukla had come
all the way from Champaran district in the foothills of Himalayas to Lucknow to speak to Gandhiji. Rajkumar Shukla accompanied Gandhiji everywhere. Rajkumar Shukla followed him to the ashram near Ahmedabad. For weeks he never left Gandhiji's side till Gandhiji asked him to meet at Calcutta. So he was called resolute, क्योंकि गांधी जी ने उसको कहा कि जब वो फ्री होंगे तब वो उसको डेट फिक्स करेंगे. तो राजकुमार शुक्ला हालांकि एक इलिटरेट था और बहुत वेल ड्रेस्ड नहीं है. ही वॉज पुअर, शेवी, इलिटरेट, बट गांधी जी वॉज वेरी मच impressed by his firm determination. He did not leave Gandhiji. Wherever Gandhiji went, he followed him. See, the next question is given. Why do you think servants thought Gandhiji to be another peasant? राजकुमार शुक्ला के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स ने गांधी जी को एक पीसेंट समझा और उनको वाटर निकालने की परमिशन नहीं थी. वेल से ही वॉज नॉट अलाउड. तो इसका कारण क्या था? दैट राजकुमार शुक्ला लेड गांधी जी टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस. राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कहाँ लेके जाता है? राजेंद्र प्रसाद के घर में. The servants knew Shukla as a poor yeoman because so many times he went to Dr. Rajendra Prasad to complain about British landlords who were pouring injustice on poor peasants. So they knew him by his face. Gandhi ji was also clad in a simple dhoti. गांधी जी भी एक बहुत साधारण वेशभूषा में थे. He was the companion of a peasant. Hence the servants thought Gandhiji to be another peasant. I hope you can understand well. And now see next part, page number 47, last para. Gandhiji decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran. En route means on the way. सबसे पहले वो कहाँ जाते हैं? मुजफ्फरपुर, जो रास्ते में ही पड़ता है. टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग. और फैक्ट्स और सबूत जमा करने के लिए, जानने के लिए ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर JV कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर. मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज में वहाँ पर JV कृपलानी को टेलीग्राम उन्होंने सेंड कर दिया था. होम ही हैड सीन एट टैगोर्स शांति निकेतन स्कूल, जिनसे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिल चुके थे. द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15th April 1917. कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स. जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो कृपलानी बहुत सारी स्टूडेंट्स के साथ स्टेशन पर उनका इंतज़ार कर रहे थे. गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी. और गांधी जी 2 days प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुके, हु वॉज टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल. सो इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज. उन दिनों, ये 1917 की बात है, 15th April 1917. एक गवर्नमेंट स्कूल की टीचर के यहाँ रुकना बहुत बड़ी बात होती थी. एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग. गांधी जी कमेंटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी. इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ The Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. और लोग जो हैं डरते थे क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी. The news of Gandhiji's arrival advent
nature of his mission, that he was reaching for a noble mission, spread quickly. उनके आने की खबर बहुत तेज़ी से फैल गई. Through Muzaffarpur and to Champaran, sharecroppers from Champaran began arriving on foot. By convinced to see their champion, लोग अपने चैम्पियन यानी गांधी जी को देखने के लिए दूर दूर से निकल पड़े. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम. गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को बुलाया, सारी रिपोर्ट मांगी. दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट्स ग्रुप्स इन कोर्ट. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी. पहले पुअर पीजेंट्स लॉयर्स के पास पहुँचे थे अपने केस के लिए, लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी. गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स. चाइडेड मीन्स होता है स्कोल्डेड. गांधी जी ने लॉयर्स को स्कोल्ड किया बिकॉज दे वर कलेक्टिंग बिग अमाउंट ऑफ फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. वो शेयर क्रॉपर्स से, पुअर पीजेंट से बहुत ज़्यादा फीस ले रहे थे. ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स. गांधी जी को मालूम था कि लॉ कोर्ट से फैसला मिलना बहुत मुश्किल है. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड. पुअर पीजेंट्स ऑफ आवर कंट्री, दे वर क्रस्ड, एक्सप्लॉइटेड, ऑप्रेस्ड एंड फियर स्ट्राइकन. बहुत डरे हुए थे, क्रस्ड थे. लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस. Real relief for them is to be free from fear. गांधी जी thought first of all they should be free from fear. सबसे पहले तो उनको भय मुक्त होना पड़ेगा. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. जितनी भी एस्टेट्स थी, जितनी भी अरेबल लैंड थी, उपजाऊ ज़मीन, उसके मालिक ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, इंग्लिशमैन, और उसमें पुअर इंडियन टेनेंट्स वर्क करते थे. चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. और उसमें जो हमारी चीफ कॉमर्शियल क्रॉप थी वो इंडिगो थी. इंडिगो नील की खेती. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. ये एक long-term contract चल रहा था. So dear students, see, think as you read. I am going to discuss few questions with you. First question is given, list the places that Gandhi ji visited between his first meeting with Shukla and his arrival at Champaran. Gandhi ji's first meeting with Shukla was at Lucknow. गांधी जी की सबसे पहली मीटिंग राजकुमार शुक्ला से कहाँ हुई थी? लखनऊ में. Then he went to Kanpur and other parts of India. He returned to his ashram near Ahmedabad. Later he went to Calcutta, Patna and Muzaffarpur before arriving at Champaran. चंपारण आने से पहले डिफरेंट प्लेसेस में गए. मुजफ्फरपुर गए, कानपुर, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. Later he went Calcutta, Patna and Muzaffarpur. And one more question is given here. What did peasants pay the British landlords as rent? The peasants paid the British landlords indigo as rent. जो peasants थे, poor peasants, उनको ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स से, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को जो इंडिगो है, नील की खेती जो करते थे, वो सब पूरी एज ए रेंट पे करनी होती थी. वॉट डिड द ब्रिटिश नाउ वॉन्ट इंस्टेड एंड वाई? वॉट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो? सो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट. सी,
Presently, the landlords learned Germany had developed synthetic indigo. अब लैंडलॉर्ड्स को ये मालूम हुआ कि जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप की है. They thereupon obtained agreement from the sharecroppers to pay them compensation for being released from 15% arrangement. Dear students, see, when Germany had developed synthetic indigo, so the British landlords wanted money as compensation for being released from the 15% arrangement. Prices of natural indigo would go down due to the synthetic indigo. So this was the new agreement. Sharecropping arrangement was irksome to the peasants. Many signed willingly. बहुत से लोगों ने अपनी इच्छा से साइन कर लिया. Those who resisted, कुछ ने विरोध किया. Engaged lawyers. The landlord hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed. They wanted their money back. बहुत सारे पुअर peasants अब अपनी मनी वापस चाहते हैं. At this point, गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण. जब ये एक प्रॉब्लम चल रही थी उनके राइट्स को लेके, गांधी जी रीच्ड देयर इन ऑर्डर टू फाइट फॉर द नोबल कॉज. गांधी जी जो हैं जितने पुअर पीजेंट्स थे उनको उनके राइट्स दिलाना चाहते थे. नाउ ही रीच्ड देयर. सो दिस चैप्टर डिस्क्राइब्स द चंपारण विजिट ऑफ महात्मा गांधी. I told in this part, which was undertaken casually on the entreaty of poor peasants, Rajkumar Shukla, in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhiji's life. This story describes Gandhiji's struggle for the cause of sharecroppers of Bihar and how he asked the Britishers to leave the country. It highlights the leadership shown by Gandhiji to secure justice for poor, oppressed people. And it will be continue in my next part. Dear students, just keep watching videos and I will explain the concluding part in my next video. Give your opinion, comment, compliments in the comment box. Thank you.